अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल इजलास में सरबराह आलमी एटमी तवानाई एजेंसी राफेल ग्रोसी ने कहा कि अमरीका की ईरान पर बमबारी से कशीदगी मजीद फैल गई है। एटमी तनसीबात पर हमले के शदीद मुखालिफ हैं। राफेल ग्रोसी ने कहा कि IAEA के इंस्पेक्टर को ईरान का दौरा करने दिया जाए ताकि ईरानी जौहरी तनसीबात का मुआयना मुमकिन हो सके। The dramatic events in Iran have become even more serious with last night's bombardments and the potential widening of the conflict. We have a window of opportunity to return to dialogue and diplomacy. Israel, Iran, the Middle East need peace, and there is a path for diplomacy. To the negotiating table and allow the IAEA inspectors, the guardians of the NPT, to go back to Iran's nuclear sites and account for the stockpiles of uranium. IAEA inspectors are in Iran, and they must do their job. This will require a cessation of hostilities at the Isfahan nuclear site. Additional buildings were hit overnight.